हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे अभी एक नया सिस्टम। और हम अभी तक अपनी कैलकुलेशंस में डिग्री यूज़ करते आ रहे हैं, बट हम आज एक नया सिस्टम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक और यूनिट यूज़ करेंगे जिसको हम रेडियन बोलते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू इट, इस रेडियन की ज़रूरत क्या पड़ी, वाई वी यूज़ इट, and what is problem in using degrees, right? तो इन सब का क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ. लेट्स से you know we have a circle, right? So we have a circle. मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल कार है या एक सिंपल कार है जो एक ही स्पीड से चलती है. सो वो कार जो एक ही स्पीड से चलती है वो मैंने इस रास्ते पे चला दी, राइट? मैंने इस सर्कल पे एक रस्सी बांध के वो कार चला दी. एंड नाउ आई एम आस्किंग इज, उस कार की स्पीड मेरे को पता है वो क्या है. सो 5 मिनट बाद मैंने उस कार को रोक लिया. ठीक है, पहली बात तो उसने एक एंगल कवर किया होगा, राइट? उसने एक एंगल कवर किया होगा. आई डोंट नो व्हाट इट इज राइट नाउ. सो बट मेरे को ये पता है, अभी मेरे को रस्सी की लेंथ पता है जो मैंने उससे बांधी है. लेट्स से रस्सी की लेंथ आर, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कोर्स. एंड वो 10 सेकंड चली अगर वो कार. लेट्स से मेरे को उसकी वेलोसिटी पता है v. वो 10 सेकंड चली. उसका आई मीन दिस इज नॉट वेलोसिटी, सॉरी, दिस इज स्पीड. मेरे को उसकी स्पीड पता है v, और वो कार चली 10 सेकंड. सो इनटू 10 seconds, this comes out to be the distance traveled by the car, right? तो डिस्टेंस आ गया. तो अब ओके, सो मैंने डिस्टेंस देख लिया. अभी एक बारी के लिए 10s है एक बारी. लेट्स नॉट चेंज इट फॉर समटाइम्स. 10s is the distance. Okay, but what if I ask you how much degree angle it covered? Now that's actually not a very difficult question to answer, but फिर भी आपको थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, बिकॉज आपको फिर सोचना पड़ेगा. अभी अगर इसने 10 एस डिस्टेंस कवर किया है और इस इसकी रेडियस आ रहा है, तो आप कहोगे भी मान लो भी 2πr जो है वो सरकमफ्रेंस है और इसने 10s कवर किया है, है. सो इसकी स्पीड अभी के लिए मैं कोई नंबर एज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स जस्ट से दैट रेडियस एंड स्पीड आर बोथ इज इक्वल टू 1. Radius is 1 meter, speed is 1 meter per second. So don't worry about the units right now. So मैं कहता हूँ इसने 10 से डिस्टेंस कवर किया है, तो एक रेशो निकाल लेता हूँ मैं. सो इसने 10 से डिस्टेंस कवर किया, तो पी रेशो क्या है अभी, सॉरी आर ए रेशो क्या है अभी, इसने कितना पार्ट ऑफ सर्कल कवर कर लिया. सो मैंने निकाली और इट कम्स आउट टू बी 5/π, राइट? सो इतना पार्ट ऑफ सर्कल इसने कवर कर लिया, बट आई स्टिल डोंट नो व्हाट हाउ मच डिग्री इट कवर्ड, राइट? सो दिस ये पर लेकिन हमको ये पता है एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं. सो इसने जितना पार्ट भी कवर किया तो इसने 360 का भी उतना पार्ट ही कवर किया होगा. सो 5/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सो उतना ही पार्ट इसने 360 डिग्री का कवर किया होगा. सो एक्चुअली इधर मैंने रेडियस बहुत छोटा ले लिया, सो इट्स कवरिंग मोर देन इनफ ऑफ द द लेंथ. सो अगर मैं कोई रेडियस लेता अभी 1 लेके अगर 3 ले लेता, so that would have been better. So let's say भी मैंने 3 ले लिया, so 5/3π, right?
and this is 120 degree. So this comes up to be the 120 by pi, which if I take like this will be less than this will be number like 37 or something. So 37 degrees it opted to cover, right? So I have to go through this tedious calculation of first calculating how much distance it covered, and then dividing that distance by 2 pi r always, and then that distance I have to multiply by 360 degree to just get me how much degree I covered. And also, if you want to do it the same thing, let's say that a person is standing in, you know, in the center of the circle, and he tells you how much degrees it has covered, right? So it takes a d and it's measure the, angle which is covered. So the guy tells me that he covered 10 degree, right? So let's say the guy told me that the car covered 10 degree. So now I'm just taking this as 10 degree for like it's more than 10 degree. Let's just take this as 10 degree. Uh, so let's take this as 10 degree. God. So let's just take this as 10 degree, right? So now what I'm asking is how much distance it covered. Now that again is a very tedious question. So we have to divide 10 degree by 360 degree, and then we again have to calculate 1 by 36, and 1 by 36 of then we have to multiply by 2 pi r. So it's very tedious calculation every time you want to calculate distances. And even in higher classes we have ways of doing and finding functions. So for this sake for this sake alone, we use something known as radians. What is a radian is, it's a, we all know that circumference of a circle is 2 pi r, right? But the when we actually say the actual formula for the circle circumference is, let's say, or the arc, I might say, because arc is a smaller circumference. So actually formula for the arc is theta, which is some angle. It's not in degrees but in some other real number, into radius. Now let's say for the argument's sake that we are covering the whole circle, which means that we are covering all 360 degree, and in that case the arc is the circumference of the circle, so which it means 2 pi r, right? And theta into r, and here also 2 pi r. So 2 pi cancel and theta comes out to be 2 pi. Now this is the formula that quite you know few of you might have known before. So what this is like, see, of course, circumference, you all know pi, right? Pi is equal to the circumference of a radius, which is 2, I mean the arc actually, or let's say the circumference only. The circumference divided by diameter. Diameter is 2r. So when I take this, the circumference comes out to be 2 pi r. See, the r is always constant. So what we thought about is we take this angle as a theta. What the mathematicians thought that we take this angle as theta, a constant kind of. So whenever we have to even calculate smaller stuff, right? So if I want to calculate a different, arc, and let's say the arc is 1/4 of a circle, we if divide the circle in 4 parts.
then this arc just we know its circumference 1/4, so we can say just 2 pi r divided by 4. So it comes out to be pi by 2r. So this pi by 2 again, it's like I can tell you it 1/4 of a circle just cover 90 degrees. So this pi by 2 again is left. So what we did is, cause theta here, the thing here helps in our calculations and helps us to identify how we make the calculations. तो हमने क्या किया, हमने ये थीटा को लिया, we said let's this be upper new angle, cause अब इस एंगल का फायदा क्या है, cause अब मान लो भी हमने वो गाड़ी को पता करना है, भी वो 10 मीटर चल गई है। सो व्हाट, अगर वो 10 मीटर चल गई है और हमने क्या करना है, सिर्फ उसको 10 मीटर चल गई है, उसको हमने 2r से डिवाइड करना है बस, राइट। और व्हाट आई टोल्ड यू इज circumference is equal to theta by r, or in theta into r. So now what we have to do to find out our new angle is we have to just divide it by r. So मैंने कहा भी कार 10 मीटर चल गई है और I have to just divide it by r, right? So this comes out to be my new theta. So this we named radian. We named this thing radian as written here. And as you know, the circumference of a circle is 2 pi r. So when we divide by r, we get 2 pi. And a circle is of 360 degrees, so 2 pi is equivalent to 360 degree. You can of course think it for yourself. तो इससे हमें नोटेशन से फायदा क्या हुआ है, और लेट्स जस्ट कैलकुलेट हाउ मच 1 रेडियन इज फॉर फर्स्ट. So 1 radian is equal to radian is equal to circumference upon radius. So circumference upon radius, but this tells me that circumference is equal to radius. So when when a distance or a arc length, I might say, of r, a radius is covered, let's say if somebody is for this time that its radius is r, and I also cover r distance here, right? So this is equal to 1 radian, and 1 radian almost is uh, बराबर किसके होता है, 1 radian, let's just calculate how much 1 radian is, right? So radian, actually I'll tell you in the next class किसके बराबर होता है 1 radian. You will find out how much is 1 radian. So this is why we use radian sometimes. And also to note that sometimes actually your degree, the 180 degree, 90 degree, 360 degree you actually tell me about, it's not a real number actually. It's some else type of quantity, something else, right? So it's not actually a real number, so we can't actually use it in our calculations, right? So if I wanna just if now I wanna tell how much distance my car covered, I can just tell you like, so theta is the distance, theta is the radius, sorry, angle is covered. My guy in the center can tell me, my guy who is sitting at the center of the circle is gonna tell me that how much theta my car has covered, right? And I have to just multiply with that theta by r, and I am gonna get the arc length. Okay, and I am gonna just get the arc of how much distance is covered, right? This is quite fairly easy.